So today's agenda is on the second unit. Second unit talks about our entire price mechanism mainly, or how the demand and the supply works, or किस तरह से elasticities come into play, and eventually consumers produce a surplus. I would make a guess. इस साल अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस जरूर बनता है. Elasticity is included with consumer producer surplus. That would be a nice question to give, right? अब elasticity के अंदर it's very hard to guess कि PD पे होगा, PS पे होगा, YET पे होगा या XET पे होगा. You can give a combination. आते रहते हैं. तो let's see कि किस तरह की questions we can deal with these. So from the shortlisted, some of the question expected, this is what I would look at. Pehla question, if you take a look at it, क्या कहते हैं? With the help of a formula, all right, with the help of a formula, that means formula लिखना जरूरी है और explanation के अंदर मुझे formula को use करते हुए उसको actual function करते हुए उसको explain what is meant by PED and consider which factors are most important. I would like to highlight this because mirror 2 mark evaluation is about which factor is most important, right, in determining whether demand is likely to be price elastic or inelastic. 6 out of 8 उठाना कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. Knowledge and understanding, again, give as much information as you can possibly, right? This is what I would do. And ये जो बात है ना, use with the help of a formula. So let's try and use the formula also along with that. Also, इन्होंने कोई वो नहीं दिया कोई particular type of a good, right? तो please make sure जब आप type of the goods की बात करो या ना भी करो, it's totally up to you. I think नीचे example के अंदर हो ही जाएगा. But this is what I would definitely want to see in this. Number one, you define the price elasticity of demand. Some of you are still not explaining PED correctly. एक तो नंबर वन, तो मुझे पीईडी का फॉर्मूला ही सिर्फ लाइन में लिख के दे दो, so that is not explaining the PED की definition. What you tend to do is you say that, uh, PED is the change in quantity when there's a change in price. That's, it's not perfect. What's perfect is that what PED does, that it measures the changes. It's a tool with which you measure the change in quantity demanded when there is a change in price. This is your formula. फिर उसके बाद what do I need? What do they mean by with the help of a formula? Elastic or inelastic बताना है. So let's say I'll pick with elastic, and with elastic, what you say is that usually the percentage change in quantity demanded is bigger than the percentage change in price. Have I really used the formula? Yeah, in a way. And by the way, exam के अंदर you can't write these things. ये जो मैं symbols कर रहा हूँ ना, make sure that you're writing in words the whole thing. Quantity demanded के लिए QD आप use कर सकते हो once you've written the whole thing. Quantity demanded, brackets QD, फिर जितना QD use करना है तुम कर लो. When they say with the help of the diagram explain, तो फिर मैं ये भी बता सकता हूँ in my explanation that if there is a 10% change in this and there's a 20% change in that, obviously price rise, quantity falls, you have a -2. So as long as PED is greater than 1, we call it elastic. Knowledge and understanding के लिए. Again, don't spend too much time in this. इसको जल्दी जल्दी से wind up करना. Again, with the formula, पता नहीं किस हद तक, I think a lot of people would say कि इतनी information की जरूरत भी नहीं है. But because उन्होंने कहा using the formula, I just want to be sure कि तुम कहीं पे भी किसी किस्म का mark lose नहीं होना चाहिए, right?
Would you make a diagram over here? Absolutely not. You're not going to waste your time doing that as long as you're telling me greater than, less than. Because remember, we want to move into the other part in the analysis, that which factors are most important. We want to eventually answer that. So, pehle, briefly, you will tell me, though, all right, what makes it elastic and what makes it inelastic. वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जब तुम explain करोगे, so this is what I want you to do. Stock availability की बात करो, but don't keep it open-ended. Explain that if you have no or little, then if there is a change in price, you can't really change the quantity, and so it becomes inelastic. However, if you have a lot of stock or something, then you can easily change the quantity and it becomes elastic. Or you can talk about necessity versus luxury, whatever you're comfortable with, or the proportion or percentage of income spent or something like that. Use that. You can go for, like, if it's a habitual good or बहुत सारे हैं. Make sure that you're using you're explaining उसका elastic और inelastic के साथ links जरूर बनाओ. Like for example, necessity is inelastic, yeah, and luxury is elastic. You can use examples to do that. अब evaluation क्या होगी? Which one is the most important one? Well, I would say that कोई एक particular most important नहीं होता, right? It is कि हर गुड के ऊपर ये 3-4 फैक्टर्स, इलास्टिसिटी के फैक्टर्स आर प्लेइंग एन इम्पैक्ट. जहां बहुत सारे फैक्टर्स अगर इलास्टिक के ज्यादा हैं तो probably the good will be more on the elastic side. If it has more factors on the inelastic side, तो फिर good inelastic हो जाएगा, right? Which factors are most important? तो factors लिखा है, which factors are most important. It's not about which factor is the most important. So multiple factors की बात हो रही है. So then you can pick one or two of them, that stock की availability, and you can talk about agriculture के अंदर, because usually the goods are perishable, तो वहां ज्यादा आप स्टॉक रख नहीं सकते हो, तो वहां पे जो है इनइलास्टिक का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा. ठीक है, तो इस तरह से तुम गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो, that might have an impact. Necessity versus luxury के अंदर obviously you can talk about it. Proportion of income spent के हिसाब से ले सकते हो. I think important तो इसमें से स्टॉक के ऊपर है हमारा, or necessity, luxury would be the good ones to talk about. I would personally choose these two. But it really depends on what type of good are we talking about, right? How good to good vary karta hai. So you can actually say that in the evaluation eventually as one pointer, right? Not the whole thing, कि it depends. ये इस तरह से नहीं फजूल बात करना. जैसे अक्सर तुम लोग पैराग्राफ में जान छुड़ाने वाले काम करते हो ना evaluation में. Avoid doing that. नहीं करो ऐसे काम. All right. 1B says assess the importance of knowledge of PED for its product for a firm. देखो जी, I'm not going to spend too much time on it. This is there on the drive. I'll just tell you क्या दो चीजों की मुझे अच्छी सी explanation चाहिए. ठीक है. पहली बात, importance की बात करनी है, तो पहला लिंक पीईडी का तुमने रेवेन्यू से कनेक्ट करना है. ठीक हो गया. तो फर्म की प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, सबसे ज्यादा तो फर्म के लिए जो इम्पोर्टेंस है फॉर द नॉलेज ऑफ दिस, पीडी की नॉलेज इज फॉर द प्राइसिंग स्ट्रेटजी. पूरा एक्सप्लेन करोगे अच्छे से
कि अगर गुड इलास्टिक है which means greater than 1 so they should lower the price. If it's less than 1, sorry, if it's less than 1 they should increase the price. And why? पूरी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करो, समझाओ। ठीक हो गया? दैट इज वन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। एक तो हो गया प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। और क्या हो सकता है? एक आप कर सकते हो कि फर्म जो है टैक्स इम्प्लीकेशन को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, दिस विल कम अ लिटिल लेटर, यूनिट नंबर 3 के अंदर, but since in this question we can talk about it because we'll assume that you're supposed to know this knowledge, कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, राइट, आई होप यू नो दैट, अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है और अगर गुड इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर पे बर्डन आएगा। द प्रोड्यूसर बर्डन इज मोर, राइट? So the firm can use this knowledge to change its elasticity to PED less than 1. Do you understand that? So the firm can actually do that. Yeah, Uday, you have a question. सर क्या आप ये टैक्स इम्प्लीकेशन को ग्राफ के जरिए तरीके से समझा सकते हैं? I would suggest कि नहीं करना ग्राफ को यूज। टाइम नहीं जाया करो, टाइम कम है। जहाँ जब तक डायग्राम मांगते नहीं है उस वक्त तक डोंट डू इट, अनलेस कि तुम्हारे पास अच्छा टाइम बचता है एंड यू कैन डू इट तो सही है, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस। ठीक हो गया? तो ये दो बातें हो सकती। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर थोड़ा सा आसान वाले पॉइंट पे जाना है तो आसान पॉइंट ये है कि अगर फर्म को अपनी इलास्टिसिटी का पता है तो दे कैन यूज दैट नॉलेज टू चेंज देयर इलास्टिसिटी, अगेन कनेक्टिंग दैट टू देयर प्राइसिंग स्ट्रेटजी कि हाउ वुड दे वांट मेक मोर रेवेन्यूज बेसिकली। बट इफ दे नो कि उनका गुड, लाइक फॉर एग्जाम्पल, उनको पता है कि उनका गुड जो है, वी आर सेलिंग आइसक्रीम्स एंड यू नो दैट आइसक्रीम के हर फ्लेवर की एक अपनी इलास्टिसिटी है। Now, using this knowledge, I know that when I am offering deal or something, there are certain flavors जिसके ऊपर मैं price reduction ज़्यादा करूँगा और कुछ products हैं जिसके ऊपर मैं price reduction करूँगा ही नहीं। Similarly, I'm sure कि तुमने देखा होगा कि अक्सर clothing उसके अंदर भी यही होता है। जब वो सेल लगाते हैं तो it's not flat out 50% sale, सर्टन यूनिट्स के ऊपर थोड़ी ज्यादा सेल होती है विच दे नो इज रिलेटिवली इलास्टिक, और बहुत सारे जो होते हैं उसके ऊपर वो सेल नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ओल्ड स्टॉक के ऊपर वो सेल ज्यादा बड़ी लगाते हैं और न्यू स्टॉक के ऊपर वो नहीं लगाते हैं, मेनली बिकॉज दैट दे नो दैट there's going to be a very less change expected from there, and they can make more revenues out of higher price rather than lowering the price. Okay, Ji. Moving on. Then question 2a. Now it says with the help of diagrams, right? Help of diagrams कह रहे हैं, formula नहीं कह रहे. Explain the difference between income and cross elasticity of demand and consider the factor which affects them. With the help of diagrams, बात बहुत बदल गई है compared to what you've done before. So let's see how to answer this one. इसमें कौन सा डायग्राम अप्लाई होगा? That's a tough thing to figure out. Normally, I've taught you two diagrams. एक डायग्राम होता है जब तुम सिंपल डिमांड का डायग्राम बनाते हो. Which one?
these ones ना, इसमें आप क्वांटिटी प्राइस लेते हो, ठीक है। इफ यू यूजिंग दिस डायग्राम, आपको पता है डिमांड कर्व ऐसे चलता है। लेट्स से दिस इज द डिमांड कर्व, एट दिस प्राइस you are buying this much quantity, ये मेरी मार्किंग हो गई, लेट्स से, बिकॉज आई नो ये दोनों इलास्टिसिटी डिमांड कर्व को अफेक्ट करती है, राइट। तो पहला कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कंसिडर व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट दैम। ओके जी, फैक्टर्स तो खास क्वेश्चन आते नहीं है इनके, लेकिन अब सबसे पहले आदत डालो इसकी। तो YD क्या करता है? YED मेजर करता है, क्या मेजर करता है? द रिस्पॉन्स इन द क्वांटिटी व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम। पहली बात तो ये करता है। फिर उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। फिर क्या कहता है? फिर इसमें एक होता है कि अगर YED की वैल्यू, इफ इट इज, ये बड़ी जरूरी है बात करना, YED की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर ये नॉर्मल गुड है which says income goes up, the demand goes up, and if income goes down, the demand goes down. Like for example, it could be branded watch. Okay. तो फिर उस केस के अंदर अगर इनकम बढ़ती है तो यू गोइंग टू सी एन आउटवर्ड शिफ्ट। ये नॉर्मल की बात कर दी तुमने, ये मैंने डायग्राम के साथ बता दिया। लेकिन अगर गुड की इलास्टिसिटी लेस देन 0 है तो फिर वो इंफीरियर हो जाता है, और फिर इंफीरियर को समझाया अनब्रांडेड वॉच, और उसके केस के अंदर द डिमांड का शिफ्ट टू द लेफ्ट। आई थिंक दैट्स अ फेयरली गुड way to explain the diagram. Again, क्रॉस इलास्टिसिटी के साथ भी यही करना है। नॉर्मल और इंफीरियर का बताना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम की शिफ्टिंग्स को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जब तुम XED को एक्सप्लेन करोगे और उसका फॉर्मूला दोगे, तो फिर तुमने मुझे XED अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये सब्स्टिट्यूट होता है, और अगर गुड की प्राइस बढ़ती है, एक गुड की, कोक एंड पेप्सी का एग्जांपल लेके चलो, कि अगर कोक की प्राइस बढ़ती है तो पेप्सी की डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। यूज प्रॉपर डायग्राम्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। और XCD अगर लेस देन 0 है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्स है, टी एंड शुगर और समथिंग लाइक दैट। और फिर दिखाओ कि अगर टी की प्राइस ऊपर जाएगी तो मिल्क या शुगर की प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो टी की डिमांड में ड्रॉप आएगा और समथिंग। चाहो तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स में ऐसे करो, टी कॉफी शुगर, नहीं, टी कॉफी शुगर, या टी कॉफी शुगर के साथ वर्क कर लो। दैट इज एन परफेक्ट एग्जांपल, जिसमें सब्स्टिट्यूट भी हो गए और कॉम्प्लीमेंट्स भी हो गए, और एक ही उसके साथ बात एक्सप्लेन हो जाएगी। बट अगेन द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, ऑनेस्टली a lot of information is required। डायग्राम्स बोला है, प्लूरल है, तो दो डायग्राम तो लाजिम है बनाने के अंदर। अगेन टू मच स्टफ टू राइट इन जस्ट 8 मार्क, बट क्या करें, एम ये है, एक चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने से बेहतर है मैक्सिमम चीजें जो क्वेश्चन में पूछी है हर किसी को थोड़ा थोड़ा सा बताओ, राइट। कोई जो चीज मिसिंग होगी ना, असल प्रॉब्लम वहां मार्क कटिंग हो जाएगी बिला वजह। कंसिडर द फैक्टर्स विच अफेक्ट देम। वेल, काफी हद तक तो डिस्कस हो ही गया है। यहाँ इनकम इफेक्ट करती है, और यहाँ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स करती है, राइट। जब तुम फॉर्मूला करोगे तो price of substitutes and price of complements is the
major factor which affects them. इसमें कुछ नहीं बोला इन्होंने ना कि कौन सा इम्पोर्टेंट है या इफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है. इट्स एन ओपन एंडेड. कंसिडर करना है तुमने कौन से फैक्टर्स अफेक्ट्स देम. तो आई थिंक ये जो तुम राइटअप कर रहे हो दैट्स गुड इनफ वन. मैं कहूंगा कि इवैल्यूएशन के अंदर आई वुड समथिंग सजेस्ट समथिंग ऑफ एन इलास्टिक इन इलास्टिक वाली बात कि अगर YED ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो वो इलास्टिक है एंड दैट विल कॉज अ लार्जर शिफ्ट. ओके. और अगर इन इलास्टिक है तो इट विल कॉज अ स्मॉलर शिफ्ट. उसी तरह से अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो इलास्टिक होंगे लार्ज शिफ्ट, और अगर इन इलास्टिक है तो स्मॉल शिफ्ट. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट ओवर हियर. इसके अंदर कोई वो बात नहीं है कि विच वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट या विच वन इज मोस्ट इफेक्टिव. तो कोई मसले वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में. वो मुझे खास जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात को करने की. ऑलराइट, होपफुली आई हैव क्लैरिफाइड. फिर आगे बढ़ते हैं. 2B पे आते हैं. असेस द इम्पोर्टेंस टू अ फर्म ऑफ नॉलेज of the income and cross elasticity of demand for its product. Again, ये वाला क्वेश्चन भी काफी हद तक सॉल्व हुआ है उसके अंदर. किसमें? फाइनल प्ले के अंदर. डू टेक अ लुक एट इट. तो इंपॉर्टेंस टू द फर्म ऑफ द नॉलेज. पहले YD की नॉलेज को कर लो. YD की नॉलेज को तुमने कैसे करना है कि अगर फर्म को पता है कि इकोनॉमिक बूम एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जिसमें इनकम्स राइज होती हैं, तो अगर वो नॉर्मल गुड बेचते हैं तो दे विल एक्सपीरियंस अ राइज इन द डिमांड. स्पेशली अगर प्रोडक्ट इलास्टिक है तो दे विल एक्सपेक्ट अ लार्ज शिफ्ट इन द डिमांड. डन. तो इस नॉलेज को वो यूज करते हुए दे कैन डू एन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. ठीक हो गया. या दे कैन प्लेस लेबर ट्रेनिंग सो दैट दे मेक श्योर कि जब डिमांड बढ़े तो दे हैव इनफ पीपल टू take advantage uh, of that rising demand. Maximum revenue कमाना है, right? That is what their intention is. तो firm के लिए it's gonna be about the expansion strategy mainly. Okay? But अगर inferior good बना रहे हैं तो they would expect a fall in the demand. तो now they would know कि inferior के केस के अंदर जो है हमको क्या करने की जरूरत है. Because you would, with the rising incomes, you would expect the demand to fall down. You would plan either to cut down production, or you're going to think about an advertisement strategy जिससे तुम अपनी डिमांड को वापस इंक्रीज करने की कोशिश करो. यू अंडरस्टैंड. तो ये तुम्हारा हो गया इनकम की बेसिस के ऊपर योर नॉलेज कि किस तरीके से यू वुड वर्क. अगेन, क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर फर्म क्या करेगी? सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जो राइवल की प्राइसिंग स्ट्रेटजी है उससे दे वुड नो कि देखो जी हमारे को ज्यादा फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा. अगर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इलास्टिक है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो इफ द प्राइस गोज अप यू नो दैट योर डिमांड इज गोना फॉल ridiculously. So what you need to do is either try to make your good inelastic, do some advertisement, create some branding, you know, or simply just cut down on the production so that, you don't have overstocking in your hand or something. तो उस तरीके से तुम राइवल्स के साथ उस बात को कनेक्शन कर सकते हो. बट लास्टली, क्योंकि ये क्वेश्चन है असेस द इम्पोर्टेंस टू अ फर्म, you have to talk about the other side of it also, that
इन elasticities के कुछ inherent issues हैं. Inherent issues like ये statistical survey के ऊपर dependent है कि आपकी elasticities की क्या value है. They can be very costly, they can be time consuming, and by the time you have the numbers it becomes obsolete, you know. इन दोनों में से कौन सी चीज के ऊपर आप ज्यादा रिलाई कर सकते हो? वेल, income elasticity is dependent on income, economy में क्या चल रही है. This is out of hand for the firm, right? उसी तरह से जो rivals की जो pricing strategy है, that is also out of your domain. तो काफी हद तक you don't have much control over it. पीडी के अंदर you have control over the prices. So अगर comparison आता है कि out of these which one the firm has more control over, तो फिर उसके अंदर definitely I would say कि हमारे पास ज्यादा कंट्रोल पीईडी के ऊपर है. ओके, लेकिन उन सबके स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑब्सोलीट, कॉस्टली और ये सब प्रॉब्लम्स हर इलास्टिसिटी में. Okay, moving on. Question 3a says, with the aid of diagrams, right? Explain and compare a movement along and shift of the demand curve. I don't think I need to go over this question. दो डायग्राम्स की जरूरत है. एक मूवमेंट का बनाओगे, सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ डिमांड समझाओगे, डिमांड कर्व की डेफिनेशन दोगे, नॉट डिमांड कर्व की. उसके बाद शिफ्ट के कुछ फैक्टर्स बताओगे. इफ you have to make a comparison, right? अच्छा, by the way, would you do that? मूवमेंट होती है प्राइस की वजह से. प्राइस गोज अप, क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, एंड डिमांड कर्व पे एक अपवर्ड मूवमेंट आती है. व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. जब सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट आता है तो उसकी वजह से जो है मूवमेंट क्रिएट होती है डिमांड कर्व के अंदर. यू माइट वांट टू सजेस्ट समथिंग लाइक दैट, बट मेन फोकस इज कि प्राइस रिलेटेड है. शिफ्ट के मुझे एक आध रीजन बता दो. Shift लिखा हुआ है, it's not shift to the right or to the left. In the question they can actually give you a direction, ठीक है, using one of the factors कि population rise हो रही है तो बताओ क्या होगा. 3b के अंदर assess the likely effects of a fall in interest rate on the market for privately owned houses and the rented accommodation. What assess the likely effects? Okay, क्या होगा? दो चीजें हैं, हाउसिंग एंड रेंटेड अकोमोडेशन. आई वुड सस्पेक्ट दैट दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं. डायग्राम बना के काफी अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, बट द की आइडिया हियर इज the recognition that if there is a fall in the interest rate, the borrowing would rise, right? तो होगा क्या जब तुम दो डायग्राम्स बनाओगे, एक इसका बनाओगे, एक कह लो प्राइवेटली ओन्ड हाउसेस का कह लो, और दूसरा डिमांड सप्लाई रेंटल प्रॉपर्टीज का कर लो. ठीक है जी. What you're going to show is that if there is a fall in the interest rate, you would expect that the demand for people taking out mortgages and wanting to buy a house is going to go up, which would lead to the rise in the price of this. And since people are basically buying houses, the demand for this should fall, and that would lead to lower prices in the rental side and stuff like that. Okay, so this is something that you can talk about in this one. Effects की बात हुई है, likely effects. So that means you have to talk about the price changes and the demand and supply changes and all of that. If you want to talk about elasticities over here, कि housing के अंदर जो है supply curve inelastic होते हैं because there's just so much number of houses that can be produced in a given period of time. So you can talk about that.
It's up to you. Remember, interest rate is not the only thing. People who have cash, they can still, even if the interest rates are falling, they can use their own money to buy that. Or maybe if the interest rate are falling, people already have loans which they have to pay off, and they might not be interested in buying citrus paribus. Uh, it's up to you किस तरीके से तुमने जाना है इसके अंदर. Whether the change is gonna happen to quite a degree or not, उस पे बात कर सकते हो वैल्यूएशन के अंदर. शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात कर सकते हो कि शॉर्ट रन में क्या इम्पैक्ट आएगा, लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट आएगा. Because remember, it's a monetary policy they're using, and the demand's not gonna, people are just not gonna buy houses in an impulse or something. Uh, it takes time for people to make that decision, right? So maybe in the short run, there might not be such a large increase in the demand, and there might not be such a large fall in the rental. ठीक हो गया. But in the long run, changes might happen. 4A के अंदर कह रहे हैं with the help of diagrams again, explain करें and compare करें an increase in the quantity supplied and an increase in the supply of product. Simple है, वही बात हो रही है. यहाँ इन्होंने words देखो क्या use किए हैं. Quantity supplied, increase in supply. एक movement और दूसरा shift. तो go over that, जो हमने ऊपर डिमांड वाला कर्व का डायग्राम किया है, pretty much exactly उसी लाइंस के ऊपर ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा. कंपेयर करना है ऑब्वियसली. व्हेन दे से कंपेयर, तो योर कंपैरिजन शुड बी कि देखो इसका जो है इसके अंदर एक ही डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रही है, इसके अंदर उसी प्राइस लेवल के ऊपर बंदा ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, हेंस द शिफ्ट, राइट. उस तरह से कंपैरिजन एंड कैसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन. 4B कहता है असेस द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज to manufacturers of electric cars on the market for electric and petrol cars. Likely effect, सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिक कार कंपनीज को. अगेन दो डायग्राम्स बनेंगे, एक इलेक्ट्रिक कार्स का बनेगा, एक पेट्रोल कार्स का बनेगा. ठीक है. जो इलेक्ट्रिक कार्स वाला डिमांड कर्व बनेगा, इलेक्ट्रिक कार्स डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम. दूसरा बनेगा डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पेट्रोल. होगा क्या, देखो जी, इसको सब्सिडी मिलेगी, सप्लाई राइट पे जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी, प्राइस में डिक्रीज आएगा, क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा. देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइट. देयर इज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व में मूवमेंट अलोंग आ रही है. क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स और ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो बेस्ड ऑन दैट, if the price is falling for electric cars, the demand for this is going to fall down. As a result, supply में movement आएगी, demand curve में shift आएंगी, overall petrol cars lower prices के ऊपर कम बिकेंगी. ओके जी. अब क्या सब्सिडी से यही इम्पैक्ट आएगा या कुछ और इम्पैक्ट भी आ सकता है? काफी हद तक तो यही होना चाहिए. Again, your discussion for evaluation purpose. It could be short run, long run decision making. It could be दोनों की demand की elasticity for countries which have plenty of infrastructure for charging and all. वहाँ पे demand काफी elastic हो जाएगी.
A small fall in the price would cause a very large increase in the demand because infrastructure is available and there are close substitutes then to the petrol cars. तो उस केस के अंदर so you can talk in terms of short run, long run again in this one कि कितना impact आएगा, but these will be the diagrams that you are supposed to make in this one. अच्छा होगा अगर diagram बनाओ इस वाले के अंदर because it sort of like reinforces the idea here. Any questions so far? 5A के ऊपर आते हैं. With the help of diagram, explain and compare consumer and producer surplus. Please गौर से ये वाले क्वेश्चंस करो. कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस अच्छे से इसको एक्सप्लेन करो, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करो. यू नो इसमें डायग्राम्स बनेंगे. आई थिंक कंज्यूमर का अपना बनाओ, प्रोड्यूसर का अलग बनाओ. एक डायग्राम मांगा है, चाहे तो वो इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम बना लो और उसमें प्राइस से ऊपर और क्वांटिटी से नीचे उसको वक्त लगाओ और पूरी बात को समझाओ, डायग्राम को सही से समझाओ कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. ठीक है, आई थिंक डिमांड सप्लाई का डायग्राम वुड बी परफेक्ट इन डूइंग दैट. वुड यू डू इट विद नंबर्स वाला? एक छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. ठीक है, नंबर्स के साथ जस्ट टू शो कि देखो कंज्यूमर माइट बी विलिंग टू पे. उसमें फिर तुमको दो डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे. आई डोंट थिंक वो एक डायग्राम से बनेगा. For an evaluation in this one, evaluation तो कम है लेकिन comparison की बात की है. Compare the consumer with the producer surplus. So when you're writing, when you're writing के consumer surplus demand curve से नीचे और market price से ऊपर है, what the consumer is willing to pay and what he's not paying, whereas producer surplus is the producer's willingness and what they are charging. तो ये एक तरीके से comparison ही है that you're making. फिर जब तुम डायग्राम में दिखाते हो ए और बी करके दिखा देना, जैसे दिस इज द डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट. ये इसके अंदर ये ए कंज्यूमर सरप्लस है और ये बी प्रोड्यूसर सरप्लस है. सॉरी, या दिस इज द डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट. तो फिर उस वो ऑब्वियसली दैट कैन बी वन कंपैरिजन आल्सो. व्हाट आई सेड वाज कि अगर तुमको नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करना है तो यू कैन डू समथिंग लाइक for this one particular quantity consumer is willing to pay $10 for it, but the market price is 6, but the producer is willing and able to charge, let's say, 2 for it. So consumer surplus जो हो जाएगा for this one unit would be 4, and the consumer surplus is also 4. ठीक है, along with consumer plus producer surplus makes the society surplus total. Right? So there's not much in this that you can do. Should you be talking about elasticities over here? चाहो तो कर सकते हो या कर लो, चलो ठीक है. अगर इन इलास्टिक डिमांड कर्व हो वर्सेस इलास्टिक डिमांड कर्व हो, क्योंकि मुझे पता है इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर डेफिनेटली आई मस्ट बी राइटिंग अबाउट दैट. लाइक फॉर एग्जांपल 5B देखते हैं. Assess the factors that might cause changes in consumer and producer surplus and the significance of price elasticity of demand and supply in determining the extent of these changes. ये question मैं करा चुका हूँ पहले भी, but let me deal with this question. Let me take a moment to do this question on the side separately. थोड़ा सा इसको मैं further explain कर दूँ. देखो जी, डायग्राम के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता वैसे तो. When they say assess the factors that might cause changes in consumer and producer surplus, हमें ये पता है ये कंज्यूमर सरप्लस है. कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस चेंज हो जाए, प्राइस का कम होने से कंज्यूमर सरप्लस में इजाफा हो जाएगा. ठीक हो गया, ये एक बात हो गई.
कि प्राइस की वजह से कंज्यूमर सरप्लस में, और सेकेंडली प्राइस राइज से प्रोड्यूसर सरप्लस में इंक्रीज आता है। तो प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर। और कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को अफेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली द इलास्टिसिटी ऑफ द गुड, ठीक है, इलास्टिक और इनइलास्टिक केस, दैट आल्सो हैज एन इफेक्ट। तो ये वाला हिस्सा बड़ा जरूरी है। अब देख लो कौन से हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। Let me do this. But I'll need a couple of diagrams for this one. Quickly do this. Okay जी, सुनो, इलास्टिक और इनइलास्टिक, सॉरी, या देखो जी, कंज्यूमर सरप्लस व्हेन दे से कि इलास्टिसिटी को देखते हुए एक्सटेंट बताओ चेंजेस इन द सरप्लसेस। When you're doing that, if there is a rise in the price, now remember one thing before we even go into anything, ये इसका कंज्यूमर सरप्लस है, ये इसका कंज्यूमर सरप्लस है। इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस वैसे कम है और इन इलास्टिक में ज्यादा है। But the real thing we're talking about is if there is a rise in the price, there's going to be a loss of consumer surplus. दोनों में ही होगा, ठीक है, दोनों में ही लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस होगा। कौन सा एरिया? ये सारा एरिया, दोनों में लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। बट किस हद तक इज अ कंपैरिजन? कंपैरिजन इज कि नोटिस करो इन इलास्टिक के टोटल कंज्यूमर सरप्लस में जो प्रोड्यूसर सरप्लस का हिस्सा है वो बहुत थोड़ा सा है, प्रोपोर्शनली इट्स लेस। इन इलास्टिक में कम कंज्यूमर सरप्लस लॉस हो रहा है। इलास्टिक के केस में प्रोपोर्शनली देयर इज अ मेजर लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। तो इलास्टिक के केस में if there is a rise in the price, there's going to be a much larger loss of consumer surplus as compared to inelastic case के अंदर. Do you understand? This is how you are going to make the comparison. And exactly the same thing is going to happen with the producers also. प्रोड्यूसर की केस के अंदर भी जब तुम इलास्टिक और इनइलास्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, फॉर एग्जांपल लेट मी डू इलास्टिक वर्सेस इनइलास्टिक, ये प्रोड्यूसर का सरप्लस है, इसमें ये प्रोड्यूसर का सरप्लस है। इफ लेट्स सपोज there is a rise in the price in this one, you would notice कि proportionally बहुत major increase आएगा producer surplus में। With the same change in the price, you would notice that proportionally this is not much of a change. इसके overall पहले जो था उसके हिसाब से जो change आया है that's much larger in percentage as compared to जो इसका था उसमें जो एक increase आया है, right? So this would be your extent to which, ये बहुत important question है, we've been testing this over and over again, and ये वाले element, last वाले element में you are not doing so well, so please ये to what extent को थोड़ा closely देख लेना। All right, moving on. Last question for this unit number 2, 6A कह रहे हैं, explain what is meant by PES and consider its significance for the speed and ease with which firm reacts to the change in the demand. Let me highlight. What do I need? Explain what is meant by PES. PES की definition, it measures the responsiveness in quantity supply due to change in price. Formula,
ठीक है। इलास्टिक इन इलास्टिक ब्रीफली एक्सप्लेन करो। ब्रीफली का मतलब कि change in quantity supplied is more than the change in price, PS value is greater than 1, it's called elastic. और फिर उसी तरह से inelastic का brief. Consider its significance for the speed and ease with which firms react to the change in the demand. So, for example, if the demand increases, we know the price is going to rise. When price rises, क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर कितना बड़ा और कितनी तेजी से इंक्रीज आएगा, कितनी आराम से और किस स्पीड से, बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट, दिस इज जस्ट एन अनदर वे ऑफ आस्किंग यू द फैक्टर्स ऑफ PES. Okay, so in this one you're saying the availability of stock. स्टॉक मैंने अभी पीछे किस चीज में बात की है? I think I've just made a huge blunder. Yeah, and nobody even told me कि मैंने ये क्या बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने स्टॉक अवेलेबिलिटी को कहाँ से बीच में लेकर आ गया हूँ पीडी के अंदर। ये तो पीएस का फैक्टर है। नोबडी इज इवन बॉदर टेलिंग मी सर ये तो कुछ और ही बात हो रही है। भाई साहब ये पीईएस का फैक्टर है। व्हाट आई मेंट टू से वाज सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी। अंडरस्टैंड? सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी की बात हो रही है इधर। इफ देयर इज लिटिल or few substitutes then inelastic, and if there are many substitutes then it's elastic. I don't know why I said stock over there. Stock तो supply का factor है। if you have, तो ease and speed को देखते हुए इन words को use करते हुए तुमको बताना है that अगर firm के पास stock available है, अगर फर्म के पास स्टॉक अवेलेबल है तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा कि फर्म बहुत जल्दी से और बहुत आराम से सप्लाई मार्केट में थ्रो कर सकती है। तो स्टॉक अवेलेबिलिटी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। फिर उसके बाद द स्पीड एट विच यू कैन प्रोड्यूस समथिंग। एग्रीकल्चर के अंदर स्पीड और ईज थोड़ी सी लिमिट हो जाती है। ईज फिर भी हो सकती है लेकिन स्पीड अफेक्टेड है बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर यू टू प्रोड्यूस अ सर्टेन गुड। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के अंदर इफ समथिंग इज नॉट सो सोफिस्टिकेटेड एंड यू कैन इजीली इंक्रीज द सप्लाई, तो फिर उसका प्रोडक्शन टाइम अगर कम है तो यू कैन इजीली इंक्रीज द सप्लाई बाय एक्वायरिंग द फैक्टर्स। तो ईज इज अबाउट कि कितनी आराम से तुम उसकी प्रोडक्शन कर सकते हो। स्पीड इज अबाउट कितनी जल्दी। दो अलग बातें हैं, बट टर्न्स आउट कि अगर आपके पास स्टॉक है तो स्पीड और रीच दोनों हो जाती है आपके पास। अगर इट टेक्स लेस टाइम टू प्रोड्यूस तो स्पीड की बात हो जाएगी। इफ इट टेक्स लेस सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट तो फिर ईज की बात हो जाएगी। ठीक है। आई थिंक इफ इट टेक्स लेस टाइम तो स्पीड की बात है। इफ इट टेक्स लेस कॉम्प्लिकेटेड रॉ मटेरियल तो फिर ईज है, द वंस विच इज इजीली अवेलेबल वगैरह। आई होप यू गॉट माय पॉइंट हियर। तो स्पीड और ईज इज बेसिकली फैक्टर्स को तुमने कन्वर्ट करना है। फिर 6B पे आ जाते हैं। 6B क्या कह रहा है? डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स व्हिच एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द प्राइस वेलोसिटी ऑफ सप्लाई फॉर फ्रेश एंड टिन्ड टोमेटोज। फ्रेश वर्सेस टिन्ड दो अलग बातें हैं, दो अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। वन, टिन्ड टोमेटोज आप स्टोर कर सकते हो, फ्रेश आप स्टोर नहीं कर सकते हो, तो स्टॉक का कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो वो कह रहे हैं डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स व्हिच एक्सप्लेन्स द डिफरेंस इन द प्राइस वेलोसिटी फॉर दिस। वही ऊपर जो फैक्टर्स को डिस्कस किया हमने, स्टॉक, टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस वगैरह।
ठीक है, इन दो फैक्टर्स को मैं लेके चलता हूँ. दो फैक्टर्स आर प्लेंटी फॉर 8 and 12 मार्क क्वेश्चंस, बिकॉज तुमको दो दो पॉइंट्स मिलते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन. तो इन दिस वन इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगेन इलास्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर किस तरह से ये लोग डिफरेंस कर रहे हैं, बिकॉज वेरी सिमिलर बात हो रही है. टोमेटोज को देखते हैं. टोमेटोज इज एग्री बेस्ड प्रोडक्ट. ठीक है, तो द थिंग विद फ्रेश इज दैट इट्स सीजनल, राइट, एंड इट्स पेरिशेबल. So based on that, seasonal and perishable and cannot be stored and it takes time to produce, उसको देखते हुए I would conclude कि ये इलास्टिक है, इसकी सप्लाई सॉरी इनइलास्टिक है. और टिन टोमेटोज जो हैं वो क्योंकि स्टोर हो सकते हैं, उसका लाइफ साइकिल बढ़ जाता है, मैन्युफैक्चर्ड हैं तो थोड़ा आसानी से आप प्रोड्यूस कर सकते हो. इफ़ यू हैव द फ्रेश टोमेटोज, थोड़ा सा लिमिटेड है. टिन जो है वो उसकी जो सप्लाई है वो फ्रेश के ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंट है, बिकॉज फ्रेश को तुम लेके उसको टिन करके स्टोर करते हो, राइट. बट स्टिल इट विल बी मोर ऑन द इलास्टिक साइड बिकॉज इट्स नॉन पेरिशेबल. शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलोगे. एंड इट टेक्स लेस टाइम टू प्रोड्यूस टिन टोमेटोज बाय द वे, बट यू नीड फैक्ट्री फॉर इट. थोड़े से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, राइट. थोड़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आ जाती है थोड़े से टिन टोमेटोज के अंदर ऑब्वियसली, एंड मेन बीइंग दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन the fresh tomato. But as far as you're explaining it, this is the idea through which I'm just thinking कि इसके अंदर do we talk about कि गवर्नमेंट किस तरह से इंटरवीन कर सकती है, या गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए टू अफेक्ट, या समथिंग along the line of how can government change the elasticity. No, I don't think so. It doesn't. It won't fit in this. But you should be prepped for something like that. ठीक हो गया. So this is how you're going to go about this one. दूसरी चीज करनी है हमने आज. I want to go over the other essays. We're just going to take a 10-minute break. 1:10 पे वापस से शुरू करते हैं. और I want to go over the unit number 3, the major one, the important one. तो प्लीज जरा उसको भी गौर से देखते हैं. ठीक है, it's more to do with the taxation and minimum, maximum and all of that. Inequality also comes into play in this one. All right, so I'll just take a pause and then we'll start in 10.